to Run Ki Runneeti, brought to you by CricTracker and Bad Brick 7. In the end, a comfortable 56 runs win for India, and courtesy that, India have become the only team so far to have attained 4 points in the points table. Talking about the match and how it shaped up, India winning the toss and opting to bowl and posting 179 for 2. In response, Netherlands managed only 123 for 9. भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे विराट कोहली नाबाद रहे, 62 रन्स बनाए उन्होंने। सूर्य कुमार यादव ने एक ब्रीजी इनिंग्स खेली, 51 अनबीटन रहे। उससे पहले रोहित शर्मा का भी 50 आया और नेदरलैंड्स जब बल्लेबाजी करने आए तो गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने पहला सेट बैक दिया और उसके बाद लगातार विकेट्स निकालती रही भारतीय टीम। विश्लेषण करेंगे इस परफॉर्मेंस का और बात करेंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में भी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, वसीम जाफर, स्टुअर्ट लॉ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू। वसीम, इस परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले अगर बल्लेबाजी का जिक्र किया जाए, रोहित शर्मा इनिशियली थोड़े स्क्रैची लगे, लेकिन उनका फॉर्म में वापस आना, रन्स उनके बेल्ट के अंदर आना कितना महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली कैप्टन है, ही वाज लकी कि वो एक कैच छूटा प्रिंगल से एट द स्टार्ट, बट ऑब्वियसली रोहित शर्मा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस टीम के, स्पेशली जो 1 2 3 4 है इंडिया का, उनका रन बनाना बहुत जरूरी है। केएल राहुल ऑब्वियसली मिस्ड आउट ऑन दिस गेम ऑल्सो। मैं सरप्राइज हूँ कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि नेकेड आई से ऐसे लग रहा था कि बॉल थोड़ा सा उधर जा रहा है, बट रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। आई मीन इंडिया के जो टॉप 4 है वही रन बनाने वाले हैं। तो कोहली ने रन बनाए हैं इस मैच में, रोहित ने रन बनाए हैं, सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। तो इट्स नाइस। एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि पहले 10 ओवर में थोड़ा सा बहुत सी रेट स्टार्ट है, पावर प्ले में इतने रन नहीं आए, बट उसके बाद में आफ्टर 10-11 ओवर्स रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोले। देन ऑब्वियसली जब सूर्य कुमार यादव आते हैं तो चेंज ही कर देते हैं पूरा गेम। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इवन दो रोहित शर्मा और हम विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स की भी बात करते हैं, हार्दिक पांड्या, बट मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप के लिहाज से आई फील सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि जहां पर थोड़ी सी रन नहीं बनते हैं, थोड़ा सा रन रेट नीचे है, आई थिंक वो बीच में आके इस तरह की पारी खेल सकते हैं कि 25 बॉल में 51, ये इन्होंने पहले भी किया है, जो रोल प्रोबेबली युवराज सिंह ने किया था 2007 में वर्ल्ड कप में। मुझे ऐसे लगता है कि सूर्य कुमार यादव कैन प्ले अ सिमिलर रोल। ही इज सच एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, क्योंकि वो ऐसे जगह पे शॉट्स मारते हैं, 360 डिग्रीज में रन बनाते हैं। तो आई फील के सूर्य कुमार यादव होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन दिस स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप। और सूर्य कुमार यादव के पहले रणजी कप्तान की तरफ से ये शब्द आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स और भी ज्यादा मायने रखते हैं। Stuart, you could just see that Surya Kumar Yadav was just doing Surya Kumar Yadav things. How good was that last ball 6? Yeah, look, he's been proven the last couple of years in IPL. He's basically been around a long time and waited a long time to get his opportunity for India, but he's certainly catching up now. He's playing some of the best innings you'd want to see. He's in the form of his life, and I thought the icing on the cake today was that only 25 balls for his 51 not out today. The sixes he hits, not many other people can hit those. So it's a great opportunity for him to bat underneath the guys like Kohli and Rohit Sharma, KL Rahul at the top of the order, to come in and put the finishing touches to an innings, and he's doing it perfectly. He's also got a bit of latitude with the likes of Hardik Pandya, Dinesh Karthik underneath him, so he can go out and fully express himself, play without fear, and he's doing it exceptionally well at the moment. Exceptionally well, and that's probably an adjective we can use for Virat Kohli as well. 2 knocks back to back, 2 half centuries. वसीम, शुरुआत में जब बाउंड्रीज नहीं आ रही थी तब भी लगातार रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंश्योर किया कि मोमेंटम टीम के साथ रहे। जी, और ये उनका गेम है मेघना, कि आके शुरू में 10-15 रन वो सिंगल्स में बनाते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी है बाउंड्री या सिक्सेस मारने की तो ऑब्वियसली वो छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है, थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, तो विराट कोहली इसी तरह से अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं कि वो 15-20 रन बनाते हैं और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। तो इट वाज परफेक्ट विराट कोहली लाइक इनिंग्स कि बैट डीप
बाद में जब मौका मिलता है लास्ट 5 ओवर में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने से फिर आपको अगर उस तरह से पार्टनर मिलता है तो इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। तो विराट कोहली के ऊपर से प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट विराट कोहली टू बैक अगेन, very good knocks. I mean, Pakistan though obviously was an exceptional knock even today. That is the thing with Virat Kohli. Once he gets into the form, he carries it for a long time, and he's got a lot of catching up to do because he hasn't scored the Virat Kohli type of runs in last 2-3 years. So you can expect, this form hopefully, fingers crossed, will carry on for a long time. Indeed. And now shifting our attention to the Indian bowlers, starting with Bhuvneshwar Kumar, providing India early breakthrough and then was utilized later on in the innings as well. Stuart, how do you look at his performance? Well, 2 maidens, to kick off proceedings. That's pretty outstanding. It's hardly ever been done. So, look, when he's on song and he has conditions that's help his swing bowling, he's a joy to watch. He really is. Watching on TV, you think he's only bowling medium pace, but he actually hits the bat quite hard and swings it both ways. He's got tremendous control and fantastic skill. So, look, he showed that tonight. The Dutch opening batsman Singh, he probably wasn't quite up to the mark, really, but he wasn't able to get away either with Bhuvaneshwar bowling, quite tight lines and swinging it both ways, causing all sorts of trouble. But he's a guy I really admire. He's not the out and out rock star that you generally see in world cricket these days. He's just a tradesman. He gets in and does his job, does it to the best of his ability, and his ability is fantastic. So, look, he set the tone. That's what you need to do as the opening bowler. You need to set the tone for your team, and no better way to do that when with a couple of maidens. So, hats off to him. He provided a fantastic start for the Indians in the field. And he's making the most out of the early movement that he's been getting at the ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स। now talking about अर्शदीप सिंह, अनुशासित गेंदबाजी का हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय पेसर्स ने डिसिप्लिन दिखाया और लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते रहे, बहुत ज्यादा रूम बनाने के मौके नहीं दिए और स्लो बॉल्स का जैसे इस्तेमाल किया। वसीम, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन, भुवनेश्वर कुमार की तो हमने बात की। अर्शदीप अगेन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आए होंगे जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सामने बॉलिंग की। और वो रूम नहीं देना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, क्योंकि यहाँ पे बाउंस होता है। आपको थोड़ा भी अगर हाथ खोलने का मौका मिलता है तो वो रन्स के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा था इंडियन बॉलर्स की तरफ से, चाहे वो शामी की बात करें, अर्शदीप की, भुवी की। भुवी तो वॉज एक्सेप्शनल, 2 ओवर 2 मेडन डाले उन्होंने, 1 विकेट ली। तो यही हमको देखना है कि ये इंडियन बॉलिंग का फॉर्म कंटिन्यू रहे, और इवन इन द डेथ इंडियन बॉलर्स की ओपनिंग हैज ऑलवेज बीन प्रीटी गुड। जो डेथ के जो 3-4 ओवर्स है, तो वो वहां पे इंडिया ऑब्वियसली हैज डन वेल अगेंस्ट पाकिस्तान। लॉन्ग इट में कंटिन्यू। जी, ओपनिंग मैच पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। क्लिफ हैंगर में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मौका है दूसरे मुकाबले में अपने स्टॉक्स को पुल अप करने का और टॉस जीत लिया है। लेकिन इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पहले भी काफी मैचेस खेले हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से परिपक्व नहीं है ये टीम। और अगर रिकॉर्ड्स देखें, आंकड़े कुछ ऐसा बयां करते हैं कि पाकिस्तान ने 17 में से 16 मैचेस अपने नाम किए हैं T20Is में। जिम्बाब्वे के नाम बस 1 जीत हासिल हुई है। तो खैर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टुअर्ट, ऑफ कोर्स, हाउ डू यू लुक एट Pakistan's chances overall in this World Cup, but more importantly in this particular game, their top order hasn't really yielded them runs as far as Babar Azam is concerned. Yeah, Babar Azam struggled so far in the tournament. He hasn't had many bats, granted, but he has struggled. Mohammad Rizwan hasn't been his usual reliable self either. He normally holds the innings together. He has recently, averaging quite highly in opening the batting in this format. So Babar Azam, it's an opportunity for him to come out and get some form against Zimbabwe, who don't underestimate them either. They've got some pretty decent and tall bowlers, which will be suited to the Perth pitch. So they've got their work cut out for them. Babar Azam and Rizwan are obviously the keys for Pakistan in the batting lineup, but I'd like to see
the middle order, you hear so much about the power hitters and the quality that they have in the middle order, the Asif Alis, the Iftikhar Ahmed, those guys. You just want to see them grab the game by the scruff of the neck and take it away from the opposition, because I have seen them bat and I've seen them take attacks apart, and they're great to watch. Just they need to stand up and help out the top order. If the top order aren't scoring runs, the middle order's got to come in and do the job. Should also mention about tall bowlers that are there in the Pakistan attack. Now, they have got another pacer in their attack at the expense of Asif Ali, and they've got Mohammad Wasim, who walks into the 11, and quite understandably so. वसीम हमने देखा है कि दोनों ही टीम की जो स्ट्रेंथ है वो उनका पेस डिपार्टमेंट है, और पर्थ के पिच पे पेसर्स को अच्छा बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें. बिल्कुल, आई मीन ऑब्वियसली पाकिस्तान ये मैच में फेवरेट्स माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. हिस्ट्री भी बताती है, जो स्टैट्स हमने देखा है. बट आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है जिम्बाब्वे का, पहले बैटिंग करना विदाउट एनी प्रेशर. अगर वो एक अच्छा डिसेंट सा स्कोर अगर खड़ा करते हैं 150 के आसपास या 160 के आसपास, उनके पास अच्छे काबिल बल्लेबाज हैं, तो अगर वो 150 के आसपास स्कोर खड़ा करते हैं तो जिम्बाब्वे के पास वैसी बॉलिंग है कि वो सरप्राइज कर सकती है. तो अंडरस्टिमेट करना बेवकूफ़ी होगी जिम्बाब्वे को. इवन दो पाकिस्तान ऑब्वियसली जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके बहुत बढ़िया है. हारिस रऊफ स्पेशली जिस तरह से बॉल कर रहे हैं. एक और फास्ट बॉलर ऐड किया है, मेरे ख्याल से वो ऑलराउंडर भी है, वसीम जो है. तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव. बट अगेन एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा. फास्ट बॉलिंग हमको देखने मिलेगी. हमने पिछले मैच में भी देखा ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह से पिच खेल रहा था पर्थ का. तो इंटरेस्टिंग है कि देखना होगा जिम्बाब्वे किस तरह से बैटिंग करती है. अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बैटल होगा. Staying on the topic of the Pacers, because that's so exciting to talk about, and Australia is letting us talk about them in detail. Stuart, talking about Blessing now and his battle with Babar Azam, how are you looking forward to it? Oh, very much so. You got Babar Azam at 5'9", 5'10", and you got Blessing Muzarabani, I think it's 6'6". So the one thing about playing in Perth, and we used to talk about this when we used to go and play in Perth, don't get carried away with the pace and bounce. It's nice seeing the ball flying through to the keeper, but don't get carried away with it. If Blessing Muzarabani can land on a reasonable length, he could probably bowl almost half volleys, and they're going to bounce quite alarmingly. If he can get his length right, it's going to be very difficult for the likes of Babar Azam and Rizwan to get on top of him. So look, it's a contest. He's not slow either, Mizrabani. He gets it through a good pace, and from that height, it's going to be a daunting prospect for the batsman. But if they get a bit of width from him, it's an easier ball to cut. Pull shots are probably out, but cut shots, clips off their pads, etc. Looking forward to seeing how Babar Azam goes against the big man. अब जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के बारे में अगर बात करें वसीम, हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है. इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी अर्ली ऑन प्रोवाइड करना. आपके थॉट्स? आई थिंक ऑब्वियसली आप यही चाहते हो कि एट द स्टार्ट आप बहुत सारे विकेट्स नहीं लूज करो. ये बहुत सारी टीमें करती है कि बहुत जल्दी रन बनाने के लिए आप चले जाते हो और वहां पर आप विकेट लूज करते हो और फिर आपको कैचिंग अप करना पड़ता है. फिर आप जाके थोड़ा सा इनिंग संभालते हो. तो अगर मुझे लगता है कि वो लोग शुरू में अगर विकेटें ना दें, अगर पहले 10 ओवर में 2 से ज्यादा विकेटें नहीं गिरे हो जिम्बाब्वे की, तो आई थिंक जिम्बाब्वे मुझे लगता है कि अच्छी पोजीशन में होगा वहां के. उसके बाद में उनके पास शॉन विलियम्स है, क्रेग अर्विन है, इवन सिकंदर रजा बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है. तो उनके लिए अगर हम अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट करके देंगे जो टॉप ऑर्डर, तो आई थिंक विल बी अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि उनके पेस बॉलर शुरू में आके ऑब्वियसली अटैक करेंगे. वो चाहेंगे कि शुरू में विकेटें मिले, लेकिन अगर वहां पर विकेटें नहीं मिली फिर उसके बाद में उनको दो स्पिनर को यूज करना है, तो वहां पर जिम्बाब्वे कैशिंग कर सकता है. So I think Zimbabwe needs to be smarter, how they approach. They don't need to go hard too soon, and probably keep a target of 140. If you keep the target too high, then obviously sometimes it's hard. But if they keep the target to 135, 140, they'll eventually get a lot more. So hopefully they do that, and don't lose too many wickets too early. Both teams have rang in a change. Let's have a look at their lineups. They're playing 11s for this match.
And as far as Pakistan is concerned, like we mentioned earlier, वसीम जूनियर आए हैं और जिम्बाब्वे के लिए भी एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ब्रैड इवांस आए हैं, चटारा बाहर हैं इस मुकाबले से। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ और वसीम जूनियर और नसीम शाह इस 11 को कंप्लीट करते हैं। जिम्बाब्वे के लिए चकाबा कप्तान, रादो विकेट कीपर, क्रेग अर्विन कप्तान, शॉन विलियम, सिकंदर रजा, वेस्ले मिल्टन और ब्रैड इवांस, रायन ल्यूक और ब्लेसिंग का हमने ऑलरेडी उनके बारे में चर्चा कर रखी है। रिचर्ड कंप्लीट करते हैं इस 11 को। Stuart, we've been talking about Zimbabwe's batting and their performances so far. Now, of course, top order hasn't been clicking. Otherwise, also it's been difficult as far as batting is concerned. Probably that's why Sikandar Raza's importance becomes even more underlined in this 11 in this squad. Yeah, it's tough on Sikandar Raza because he is the one that they're reliant on more so than anyone else. And it seems that if he doesn't score runs or doesn't contribute, it makes it difficult for the team to move forward. So you can't rely on one player all the time. Other players have to stand up. You know, the captain, Irving, needs to stand up and score his runs. There's other guys. You know, Ryan Bell burst onto the scene in Zimbabwe earlier this year with the Magic 100. He hasn't really featured, done too much in this tournament so far. So guys like that need to stick their hand up and say, right, okay, yeah, Sikandar's there. He's the main man, but I'm going to try and emulate. I'm going to try and be as good as what he can do. In fact, as Wazim said before, don't set your target too high. Don't get it out of reach. Keep it within reach, and you never know. If you keep wickets in hand, that 140 might become 160. I think if they can get 160 to 180, it'll put a lot of pressure on Pakistan to chase down that total in Perth particularly. You know, whenever my producer reminds me of Social Tracker and I see Wasim Jaffer sitting right in front of me, I feel kind of embarrassed because am I the right person to take you through Social Tracker when the star of social media, Wasim Jaffer, is right there? Stuart, I need to remind you as well, whatever you do, do not mess with Wasim Jaffer on social media because he is great with memes war, and I'd be waiting maybe in one of the episodes he can if he can unleash some of his memes relevant to the episode, we'd be waiting for that as well. Time now for Social Tracker. Wasim, let's try and this time have you go through the tweets. Are you ready for that, Google? Well, I think it will be tough. I think you do a much better job. I'll probably put some tweets or maybe memes sometimes, but I think it's better you explain it. Well, that's Wasim being modest, but here's Social Tracker for you. So, well, then there's a lot of conversation around this game, the 2 points that India have bagged. Suresh Raina कहते हैं, what a great start to today's match, back-to-back 50 by King Kohli. Congratulations on a marvelous partnership. विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच अच्छी साझेदारी हुई। उससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच काफी इंपॉर्टेंट साझेदारी हुई क्योंकि उससे पहले केएल राहुल का विकेट काफी जल्दी गिर गया था। तो ये थे सुरेश रैना के थॉट्स इस मैच से रिलेटेड। और इसके अलावा स्मृति मंधाना ने कहा है, व्हाट एन अमेजिंग न्यूज फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि मैच फीस मेल क्रिकेटर्स को जो मिलता है उतना ही वुमेन्स क्रिकेटर्स को भी मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण कदम। और इसके अलावा एक और ट्वीट जो हमारे सामने है, प्रपोजल ये है एससीजी पे कि इट्स यस, आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज there was a proposal in the stands and there was a yes and there was a lot of excitement among netizens as well. Just the right place to put up your proposal. And इसके अलावा गुड लक पाकिस्तान, बाउंस बैक विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सईद अनवर ये विश कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और इसके अलावा एक और ट्वीट जो हमारे सामने है, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स में अगर केएल 50 बनाते हैं तो वो ट्रोल होंगे, जल्दी आउट होते हैं तो भी ट्रोल होंगे। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे में भी यही कहानी होगी बाबर आजम के लिए। इसका कॉन्टेक्स्ट हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि लगातार ये बात कही जाती है केएल राहुल के बारे में कि वो जो रिलेटिवली कमजोर टीमें होती हैं उनके खिलाफ बड़े रन बनाते हैं, और बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ सारी टीमों के खिलाफ बड़े रन बनाते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ जब बनाते हैं तो ट्रोल किए जाते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ट्विटर के जरिए अभी हमें रिमाइंड की गई है, वो वुमेन्स क्रिकेट में जो डेवलपमेंट हुआ है। वसीम, इक्वल मैच फीस बहुत इंपॉर्टेंट कदम। आई थिंक सो, आई थिंक बहुत बढ़िया स्टेप है। यू नो विमेंस क्रिकेटर को भी उतने पैसे मिलेंगे, आई थिंक विच इज वेरी गुड। फाइनेंशियली ऑब्वियसली आप यू नो बेटर ऑफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये बहुत सारे क्रिकेटर्स रूरल एरिया से आते हैं, दे आर नॉट वेल ऑफ। और आजकल ये पहले जैसा नहीं है कि बहुत सारे जॉब्स हम मिलते थे। पहले बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल थे जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो अब आईपीएल, विमेंस आईपीएल शुरू हो रहा है, प्लस ये पे बढ़ गया है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप बाय बीसीसीआई। और वुमेन्स क्रिकेट को उठाना चाहिए, क्योंकि सारे लड़के तो खेलते ही हैं। मुझे लगता है कि जितनी क्रिकेट विमेन्स क्रिकेट खेल रही है और जितना टीवी पे हम उनको देख रहे हैं, lot of young girls are taking up cricket, which is very, very good. And I think Indian cricket, women's cricket especially, is going in the right direction. I think they are, improving leaps and bounds from what they were a couple of years before. I think they've improved massively. Stuart, pay parity is so important in any sport for that matter. We saw that happening in tennis long time back. It set the right example for other sports to follow. New Zealand then set the precedence, and now India also taking this important initiative. Yeah, and look, as Wasim said, women's sport is not just cricket. The women's sport has gone through the roof worldwide, and that's great for the women's game. To get equal pay as the men per game, I think is a massive plus for the girls. They put in a lot of time. They put in a lot of effort as well. They play good cricket. I've watched them closely over the years. Some women's tournaments, and some of the cricket that is played is exceptional. So you've got to understand that it's not easy paying everybody the same amount of money, but if they can get equal pay for the games that they play, a lot of heart and soul goes into every aspect of it. You practice, you're playing, you travel around and what have you, and I think it's just great for girls to be able to look at a career path and say, right, I can choose that now. And it's only the beginning. I think this is going to go a long way in the not too distant future, where the women's game will be totally professional worldwide, and I think that's a great thing. The amount of money that's generated by TV revenues, surely there's enough to go around to everybody. Indeed. And Stuart, now we move on to your favorite segment. That's numbers. You're very good at numbers. So we have a special segment assigned just to bring that smile on your face. That's number trackers. Let's have a look at what the numbers say. So, well, also we'll have a look at players to watch out for. Pakistan and Zimbabwe, and these are usual suspects. We expected their names to be present. Shaheen Afridi, Babar Azam, Mohammad Ruzwan, और जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा, रियान बर्ल और ब्लेसिंग के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है। शाहीन अफरीदी पे अपना अटेंशन अब थोड़ा सा डालते हैं वसीम। पिछले मुकाबले में थोड़े से एजी लगे बिकॉज लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पावर प्ले के अंदर, खास करके पहले ओवर के अंदर वो विकेट निकालते हैं, कितने घातक गेंदबाज हैं। जी हाँ, वो पुराने शाहीन आफरीदी अभी दिखाई नहीं दे रहे। मैं भी शायद मैच रेडी नहीं है, शायद उतनी फिटनेस अभी तक आई नहीं है वापस। वो स्पीड भी देखने को नहीं मिला। 135 के आसपास स्पीड दिख रही थी, 130 135 के आसपास। जनरली वो 140 145 के आसपास डालते हैं, विच सजेस्ट के शायद अभी तक वो फुल फिटनेस में नहीं आए, वो रिदम अभी तक नहीं आया। और वो अंडरस्टैंडेबल है कि आप इतने ब्रेक के बाद आ रहे हो, सर्जरी के बाद आ रहे हो, स्ट्रेट अवे वो पुराने रिदम में बॉलिंग करना इज हार्ड टू एक्सपेक्ट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। एज द tournament progresses, as he plays more and more games, I think we'll see the old Shaheen Afridi, but he'll be happy to bowl in Perth. He'll see the ball flying. He's a terrific bowler when he's on song. But I think Haris Rauf का नाम मिसिंग है। I think probably आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है इस टाइम पे, आई थिंक हारिस रऊफ, यू विल प्रोबेबली से ही इज द नंबर 1 बॉलर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द वे इज बॉलिंग, जो स्पीड में बॉलिंग कर रहे हैं, जो रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई वुड ऐड Haris Rauf into that place to watch out. And just because you've added that name, and we totally agree with you, we'd also take Stuart's opinion on that. In the previous game, barring those 2 sixes by Virat Kohli, and Virat Kohli could have slammed any ball on that day, he could have slammed any bowler for those sixes, but he was absolutely breathing fire, Haris Rauf. He was, and he's pretty accustomed to Australian conditions as well, having played for the Melbourne Stars in the Big Bash for a number of years now. So, look, he'll enjoy bowling in Perth as well.
As I said before, but fast bowlers can't get carried away by banging it in too short. It doesn't really pose the batsman too many problems, and the boundary behind the batsman is only very short. So these days you see the uppercuts or the scoops over the keeper's head going for six there quite easily. So you've got to get your length right. The two players I want to see stand up for Zimbabwe, though, I want to see Craig Irvine, the captain. I want to see him, put together an innings of substance, which he needs to do as the captain, needs to lead his team from the front, and Sean Williams as well. The two of the most experienced players in their lineup. They haven't really featured at this stage, so they've got to stick their hand up to help out the likes of Sikandar Raza. And if they do that, Sikandar Raza can play more freely, and that's when Sikandar Raza will feature greater innings. So, look, fingers crossed that happens. So both Stuart and Wasim have revealed who they believe would be the trump cards for this game. Now it's time for the contest alert, and the contest gives you the opportunity to bag a lot of prizes, and the exciting hampers can be won. इसके लिए दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले प्रिडिक्ट करना होगा बाबर आजम का एग्जैक्ट स्कोर इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले. और दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होता है, उसमें आपको कमेंट करना होगा अपना आंसर यूज करते हुए हैशटैग BatBrick7. डेडलाइन है 4:30 PM की, मतलब कि आपके पास बस 8 मिनट है. जल्दी प्रिडिक्ट करना होगा. आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं हम अपने एक्सपर्ट से, वो फिगर्स ले लेते हैं, आसपास कुछ आंकड़े वो बता दे, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं भी जल्दी से इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकूं. आई होप माय प्रोड्यूसर विल अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट. इट्स सो एक्साइटिंग. वसीम, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? Babar Azam, I would say 35. 35. And I look at the confidence and the precision with which you have delivered that. The precision of maybe Babar Azam's cover drive. And now, Stuart, your figures. Crystal ball time. Okay. I'm going to say 7. 7. All right. Maybe an average of that might just be what it turns out to be. But interesting. So you've got your clues, and you can obviously take a decision based on that. Up next, we have the poll that we conducted earlier in the day to figure out between Babar and Blessing who will win the battle, because we've been talking about Blessing's height and how Babar is going to cope with that sort of bounce. So 58% को लगता है कि बाबर इस बैटल में विक्टोरियस निकल कर आएंगे, और इधर ब्लेसिंग के लिए 42% ब्लेसिंग्स आई हैं. तो खैर, this sets it up really nicely, because it's important. These battles within the wars actually make these contests very exciting, Wasim. Oh, definitely. I mean, Muzerbani obviously will enjoy bowling at Perth. We've said that he's tall and he'll hit that length, which will be awkward. If it doesn't give room, if it's closer to the body, it's going to make it hard for the Pakistani batters, and he's bowling well. He's in form. On top of that, Babar Azam is not in a great nick, so that gives Muzerbani a chance. And if it does that, that gives Zimbabwe, a lot of hope to do well in this game. Indeed. Of course, Babar Azam has been doing really well for Pakistan for quite some time now, but of late his form has waned. But there's an interesting googly that we have for you, Stuart. Of course, Babar Azam will continue to captain the side for the longest time because of how good he has been, how motivational he's been. We saw that viral clip as well. But apart from Babar Azam, who would you nominate as the future captain of Pakistan? Future captain? Oh, okay. I probably not in this current group. The only one you could really consider, I think, at this stage would be Mohammad Rizwan. But my personal thoughts on that is I'm reluctant to give it to a wicketkeeper. They've got enough on their plate. They've got the toughest job on the park, and to captain the team as well is very difficult. It'd have to be someone from outside the group or someone next in line who's sitting in the wings, who's going to be a fantastic player. But at the moment, the players that are there, Babar Azam is going to take it for another 5 to 10 years, surely. Who's sitting in the wings? I couldn't give you that answer. I don't know. But right now, if Babar Azam went down, it'd be Mohammad Rizwan, I think, would take over as the captain. Wasim has already worn his metaphorical thinking cap, so I'm expecting an answer. Wasim, आपका जवाब? Well, I mean, Shaheen Afridi actually has won the PSL as a captain.
He's won Lahore Qalandars their first trophy as a captain, which surprised me actually. So I don't know how tactically good he is, but he's somebody who's won the trophy. So he could be one of them. Fast bowlers we generally don't see, becoming captains. Bumrah has become one. Pat Cummins is one of them. So those two who have done well. So Shaheen Afridi probably, and Shadab. I think Shadab is probably vice captain. I think he leads the team in PSL as well, and he's somebody I think who's very vocal on the ground. When you see Pakistan play, he's always the guy who's suggesting to Babar Azam, and on top of that Rizwan as well. And pretty agree with Stewart as well, because the wicket keeper Mohammad Rizwan, he's wicket keeping, he's opening the batting. You don't want to put a lot of pressure on him becoming captain. That's added pressure to him. So probably I would say Shadab or Shaheen Afridi, in my opinion. Interesting. And of course, you explained the reason why you wouldn't nominate Rizwan. Although a certain wicketkeeper batsman, not the opener, I just disagree with you, but that's what makes for an interesting conversation, interesting disagreements, and interesting conversations and insights. Thank you so much for your insights as far as the previous match and this one is concerned. That's all the time we have. We'll be back again post the game between Zimbabwe and Pakistan. As of now, thank you, gentlemen, for joining, and thank you all for watching. Yes.